Assalamu alaikum everyone. This is Sheeza. We are going live on Rewire. I want to make sure everybody can hear me. If the moderators can confirm for me that I am indeed live, and we will start in a minute or so. All right, welcome everyone. This is a live webcast hosted by Rewire. I want to welcome you to our session. We are going to be on for about an hour. आपको खुशामदीद on this session. आज हमारा फोकस होगा मेंटल हेल्थ पे और कौन से सिम्टम्स और साइंस हैं जो आपकी थोड़ी सी मदद करेंगे इन रियलाइजिंग कि आपको हेल्प की ज़रूरत है या अपने लव्ड वंस के लिए हेल्प लेनी चाहिए या नहीं. इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आई जस्ट वांट टू थैंक रीवायर. ये एक नया ग्रुप है जो बहुत तेज़ी से चल रहा है इन रियली हेल्पिंग द प्लेटफॉर्म ऑफ मेंटल हेल्थ. पाकिस्तान में किसी और मुल्क की तरह मेंटल हेल्थ की बहुत सारी स्ट्रगल्स और चैलेंजेस हैं जो थोड़ी ज़्यादा हैं. पाकिस्तान में इतनी रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हैं जो लोगों की हेल्प कर सकें. वेलकम, मुझे सबके वेलकम मैसेजेस नज़र आ रहे हैं. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग. आई एम लविंग सीइंग ऑल ऑफ़ यू ऑन द कॉल एंड टेकिंग टाइम आउट. आई नो पाकिस्तान में इस वक्त सैटरडे नाइट है और आप लोग अपनी सोशल प्लान्स को छोड़ के यहाँ पे मुझे ज्वाइन कर रहे हैं. I am joining from Dallas and I so appreciate you hosting this. So I just want to say thank you to the organizers of Rewire. ये एक बहुत अच्छा मिशन है और फोरम है टू रेज अवेयरनेस, बिकॉज़ ये टॉपिक ऐसा है कि जिस पे लोग बात नहीं करते. पाकिस्तान में इतना कॉमनली इन इश्यूज़ के बारे में बात नहीं की जाती, लेकिन तकलीफ़ इस तरह की मोस्ट हाउस होल्ड्स में होती है. सो आज का फोकस ये है कि आपको थोड़ी सी अवेयरनेस हो कि men, women, children and how they get affected, और आपको क्या साइंस और सिम्टम्स देखने हैं. बिकॉज कल्चरली हम फिज़िकल बॉडी पार्ट्स के बारे में तो बहुत इजीली बात कर लेते हैं. घुटने में दर्द है, दिल में दर्द है, किडनी प्रॉब्लम्स हैं, डायबिटीज़ है, लेकिन एनीथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू द माइंड या द ब्रेन, इट्स वेरी वेरी हार्ड. So I really appreciate Rewire's initiative to talk about this very important topic. होपफुली आपको आज हमारा सेशन वैल्यूबल लगेगा. अगर लगे तो ज़रूर फीडबैक दीजिएगा एंड विल ट्राई टू कोलैबोरेट एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन टू यू. आज का फोकस जो है वो है थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना. सो पहले एक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट दे दूं. पाकिस्तान में टिपिकली मेंटल हेल्थ रिसोर्सेज कम हैं, अंडरस्टैंडिंग भी थोड़ी सी कम है. हम इन टॉपिक्स पर भी अगले सेशंस में बात करेंगे. आज का फोकस है आपको थोड़े से सिम्टम्स बताना. लोगों के लिए बड़ा डिफ़िकल्ट होता है इस टॉपिक पे बात करना या इवन कहना कि मुझे कोई तकलीफ़ है. डिप्रेशन है. डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सी पॉपुलेशन को इम्पैक्ट करती है. पाकिस्तान में देयर इज़ अ ह्यूज एलिमेंट ऑफ मेंटल इलनेस एंड चैलेंजेस जो इमोशनल तौर के होते हैं जिससे लोग इम्पैक्ट होते हैं. एंड आई वुड लाइक यू टू नो सम सिम्टम्स कि आप बच्चों में, टीनेजर्स में, women in your family, men in your family में अगर नोटिस करें तो I would invite you to talk to them and offer some support. बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ब्रेन हमारा बड़ा एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है जो एक तरह से एक
लीडर होता है हमारे बॉडी का, हमारी लाइफ्स को लीड करने का। सो जब वहाँ पे कोई चैलेंज होता है तो वो हमारी पूरी ज़िंदगी को, हमारी लाइफ्स को और हमारे लव्ड वंस को भी इम्पैक्ट करता है, खाली हमारे ऊपर इम्पैक्ट नहीं होता उसका। सो व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट इज़, मैं शुरू करूँगी अडल्ट से थोड़े से सिम्टम्स। ये सिम्टम्स बच्चों में और टीनेजर्स में भी पाए जाते हैं। सो व्हाट आई वांट टू डू इज़ टॉक अ लिटिल बिट अबाउट दैम, एंड देन आप थोड़े से सवाल मॉडरेटर्स को ज़रूर भेजते रहिए, एंड दे विल आस्क मी, एंड आई एम हैप्पी टू आंसर क्वेश्चंस that may be very specific to whatever you want to inquire about. Symptoms in adults. So सबसे काम करने वाले लोगों में जो सबसे बड़ा सिम्टम नज़र आता है कि काम इफ़ेक्ट होता है, फोकस इफ़ेक्ट होता है, काम आपसे हो नहीं पाता, काम में आप डिस्ट्रैक्टेड फील करेंगे, ये फोकस और अपनी जो डेली रूटीन की चीज़ें हैं मुश्किल होंगी। एंड दिस कुड बी एज सिंपल एज गेटिंग अप फ्रॉम बेड एंड गेटिंग रेडी टू गो टू वर्क। सो रोज़ बरोज़ आपके लिए मुश्किल होगा कि आप अपने रूटीन को भी फॉलो करें। इट इज़ ए सिम्टम। अनदर थिंग इज़ मूड चेंजेस। अगर आपका मूड चेंज हो रहा है, और मूड चेंजेस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, या आप बहुत डाउन फील कर रहे हैं, या फिर आपको बात बात पर गुस्सा आ रहा है। यानी कि एक छोटी सी चीज़ है कि कोई चीज़ खो गई, या कोई नॉर्मल चीज़ जिस पे आपको इतना गुस्सा नहीं आना चाहिए, लेकिन आपके गुस्से की इंटेंसिटी इज़ मच हायर देन व्हाट इज़ सपोज टू बी, देन इट्स अ रेड फ्लैग, स्पेशली अगर ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो सैडनेस, जो आप खुशी का मौका भी हो तो आप खुश नहीं हो रहे। अनदर सिम्टम इज़ सोशल विदड्रॉल, यानी कि अपनी सोशल कम्युनिटी फैमिली एक्टिविटीज़ से अपने आप को विदड्रॉ फील करना। तो दैट्स अनदर सिम्टम दैट यू वांट टू थिंक अबाउट, दैट विल बी अ रेड फ्लैग फॉर यू टू कंसिडर कि कुछ चीज़ है जिसको आपको नोटिस करना है। अनदर रेड फ्लैग दैट आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट टू यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए भी, जो बहुत अननोटिस की जाती है और लोग समझते हैं कि ये बड़ी सिंपल सी बात है, बट एक्चुअली ये आपकी फ़िज़िकल हेल्थ को भी बहुत इम्पैक्ट करती है, और ये है आपकी स्लीप, नींद। अगर आपकी नींद में मसला हो रहा है तो देर आर मैनी एलिमेंट्स दैट यू डेफिनेटली नीड टू पे अटेंशन टू। लेकिन अगर आप 7, 8, 9 जो भी आपके घंटे नींद के आपके नहीं हो रहे हैं, या फिर आपको नींद आने में मसला हो रहा है, अगर आपको नींद आ जाए लेकिन आप 2-3 घंटे में उठ जाएं और आप दोबारा ना सो सकें, और आप बहुत सारी चीज़ें, यू आर थिंकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स जस्ट रश इनटू योर माइंड, एंड you start spinning in your head, that is another red flag for you to consider. So एक और चीज़ है कि आपको obvious problems नज़र नहीं आ रही, आप उन चीज़ों में के बारे में सोच रहे हैं जो obvious नहीं है, यानी कि there are bills to be paid, there is financial distress, या फिर बच्चों की बहुत सारी needs हैं जो पूरी होनी है, लेकिन आप उनको इग्नोर कर रहे हैं बिकॉज आप जिसको कहते हैं you can't get out of your head, and you are so absorbed in your mind that it's very hard for you to focus outside. So very important for you to consider seeking help. थोड़े से मोर इंटेंस बिहेवियर्स, तो ये मैंने सिंपल बिहेवियर्स इसलिए बताए कि अ लॉट ऑफ टाइम्स हम इनको इग्नोर कर लेते हैं और बात बढ़ जाती है, थिंग्स गेट एस्केलेटेड वेयर दे कुड हैव बीन an intervention to prevent or minimize the symptoms. तो जो ज़्यादा एक्सट्रीम होते हैं, यानी कि जहाँ पे ख़तरा होता है कि मेंटल इलनेस है, बिकॉज़ ये जो मैंने आपसे पहले सिम्टम्स की बात की थी, ये सिम्टम्स एक लाइफ एडजस्टमेंट की वजह से भी हो सकते हैं, और लाइफ एडजस्टमेंट के बारे में मैं थोड़ी देर में बात करूँगी। ये सिम्टम्स थोड़े इंटेंस हैं जो अब मैं आपको बताऊँगी। Eating habits changing. So suddenly over a period of 6 months or a year, बहुत सारा weight loss या बहुत सारा weight gain, and that's not just for dieting purposes or if you're working with a nutritionist, no, but एकदम से noticeable weight change हुआ है, especially अगर weight gain हो रहा है. Also if there's risky behavior, यानी कि अल्कोहल कंजम्पशन है, ड्रग कंजम्पशन है, बुरी आदतें हैं जिनकी तरफ आप जा रहे हैं, तो देयर इज़ ए रिस्क.
आपकी थिंकिंग अगर कंफ्यूज हो रही है, आपको लग रहा है कि आप डिसीजंस नहीं ले पा रहे, दैट्स अनदर थिंग दैट यू वांट टू रियली पे अटेंशन टू. और डिसीजंस आप एक दो बड़े डिसीजंस नहीं, इन जनरल बहुत सिंपल डिसीजन से लेकर बड़ा डिसीजन आपके लिए लेना मुश्किल है. सो इट्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू थिंक अबाउट. Another very intense side effect or a symptom that you want to consider is अगर delusions या hallucinations हों. Delusions या hallucinations are another thing, और ये basically क्या होती हैं कि a lot of times culturally misunderstood होती हैं, कि हमें लगता है कि चाहे हम वॉइसेस सुन रहे हैं, चाहे हमें किसी की प्रेजेंस फेल्ट हो रही है, यहाँ पे थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी होती है कल्चरल कन्फ्यूजन की. एंड आई एम हैप्पी टू टॉक अबाउट दोज लेटर ऑन इफ़ यू विश. लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इनको अटेंशन पे करें और आप इनको इग्नोर ना करें. So ये थोड़े से symptoms थे for adults. Thank you so much. I'm also reading feedback as it's coming along from many of you, and I appreciate that and that you're finding this to be of value. अब मैं थोड़ा सा teenagers पर focus करूँगी because that's a very rough stage in life for those of you who have children. Teenage वैसे भी with the emotions and hormones raging, puberty is hard, and on top of it अगर कोई चीज़ intensely बच्चे feel कर रहे हैं, so that's another symptom कि आप उसको थोड़ी सी ज़्यादा attention दें. आप ये ना सोचें कि बस ये teenage है. Change in academic performance, ये सबसे पहले नोटिस होती है कि पढ़ाई में स्ट्रगल अगर बच्चा कर रहा है जो अदरवाइज नॉर्मल था. एंड नाउ यहाँ पे मैं कहूँगी बिकॉज पाकिस्तानी पेरेंट्स बहुत एम्बिशियस होते हैं अपने बच्चों की परफॉर्मेंस के बारे में. इट्स इम्पॉर्टेंट टू हैव रियलिस्टिक गोल्स विद योर चिल्ड्रन, एंड इट्स इम्पॉर्टेंट टू नोटिस दैट बच्चे भी स्ट्रगल करते हैं. आई एम नोटिसिंग अ ग्रेट क्वेश्चन. Is it possible for one to not recognize these symptoms in oneself? Absolutely. देखिए a lot of times जब हम पे कोई चीज़ खुद गुजर रही होती है तो it's much harder to have insight. वो एक कहावत होती है हमारे कल्चर में कि आपको दूसरों के मसले बहुत ईजिली नज़र आ जाते हैं, अपने मसले नहीं नज़र आते. सो इट टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ टाइम. एंड देन हमारे कल्चर में बहुत स्टिग्मा और शेम होता है. व्हेन यू आर सफरिंग there is an element of stigma involved where you're not comfortable sharing your pain. हमारा कल्चर बहुत perfectionist based है in my view. तो बहुत social pressure होता है, community pressure होता है कि आप सिर्फ रिपोर्ट करें जो अच्छा है. तो उस सेंस में स्ट्रगल्स के बारे में नॉर्मलाइज करना कि सब अच्छा है लेकिन दिस इज़ व्हाट वी आर स्ट्रगलिंग विद, इट्स कंसिडर्ड अ साइन ऑफ वीकनेस. जबकि वेस्ट में अब ये चीज़ बदल रही है एंड इट्स कंसिडर्ड अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ टू टॉक अबाउट वेयर यू आर स्ट्रगलिंग, बिकॉज एक स्ट्रॉन्ग पर्सन भी कमज़ोरी से गुजर सकता है. एक और रिक्वेस्ट आई है प्री टीन्स के बारे में. एब्सोल्युटली, एंड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इट. लेट मी फिनिश विद द टीनेजर्स. टीनेजर्स का एक और सिम्टम होता है जो टीन एज सिम्टम भी है और प्री टीन्स में भी कभी नज़र आता है, इज़ डिफाइंग अथॉरिटी. तो जब हमारे कल्चर में उसको कहते हैं बदतमीज़ी. नाउ इफ़ द बदतमीज़ी इज़ हैपनिंग कंसिस्टेंटली, स्पेशली बॉयज़ के थ्रू, और यहाँ पे मैं एक अडल्ट्स की चीज़ आपको दोबारा एम्फसाइज करूँगी लड़कों में, और अडल्ट मैन इज़ एंगर. बिकॉज हमारे कल्चर में और बहुत से कल्चर्स में मैन डू नॉट हैव परमिशन to be emotional or cry. So guess what emotion they access? It's anger. Anger is the only emotion a lot of times that they feel safe expressing. So even when they're feeling sad, the emotion men go to is anger and rage. तो जो teenage लड़का है वो भी वहाँ पे जाएगा, teenage लड़कियाँ भी उस space में जाती हैं. So if you see a lot of anger, and especially misplaced anger, कि छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ रहा है, there is something bothering them. There's a possibility for a conversation. कभी कभार बच्चे पेरेंट्स से बात करने में सेफ फील नहीं करते. तो it's very important for us to consider that there may be something, a deeper issue. स्किपिंग स्कूल, टीनेजर्स स्कूल नहीं जाना. अब बच्चे आपको नहीं कहेंगे कि कोई मेंटल हेल्थ इशू है, ये तो हमारा कल्चर ही नहीं है. अब वो कहेंगे उनके पेट में दर्द है, उनके सर में दर्द है, उनको नींद नहीं आई, या फिर कोई बहाना कर देंगे. दोज आर ऑल लिटिल
pieces of signs that they are trying to tell you something. So do pay attention to that. और risky behaviors में अगर आपको पता चल रहा है, पाकिस्तान में आई एम फाइंडिंग आउट टाइम एंड टाइम अगेन नाउ कि ड्रग यूज़ बहुत ज़्यादा हो गई है, बच्चों को एक्सेस है, तो यू नो कीपिंग एन आई ऑन दोज चिल्ड्रन फॉर दोज नेगेटिव हैबिट्स इज़ अनदर थिंग. I'm going to talk a little bit about children now. एक request भी आई है to consider pre-teens. This is another thing to think about is अगर temper tantrums बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, you know, छोटी सी बात पे, again, you know, आप अगर अपने emotionality को देखें on a 0 to +10 and 0 to -10 scale, और आपको लग रहा है कि हर reaction -10 पे हो रहा है या -5 पे हो रहा है, that is not warranted. सो आपने सोचना है कि कोई बात है जो बच्चा आपको कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है, बट उसके पास वर्ड्स नहीं हैं, दे आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट, और फ्लस्टर्ड और कंफ्यूज्ड सेंस में वो सिर्फ आपको अपना गुस्सा बता सकता है, वो सिर्फ आपको बता सकता है अपनी एंग्स्ट, अपनी तकलीफ, एंड दे डोंट हैव वर्ड्स. सो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट दैट यू कंसिडर what could be happening at a deeper level, and listening to them is so important. Another thing you may notice your child doing, preteens especially, could be they worry a lot. उनको परेशानी होगी, they'll फिक्र अपनी share करेंगे. That is also a symptom of anxiety. So इसको ignore ना करें आप. बहुत important है to make sure that you are noticing that. अच्छा, छोटे बच्चों का ये होता है जो 10-11 वाला होता है, बिकॉज यू नो दैट्स ऑल्सो एन एज वेयर वो थोड़े से बड़े लगने लगते हैं, एंड वी डोंट नो हाउ टू लव ऑन दैम, बिकॉज बेबीज़ को लव करना बहुत ईजी होता है, बट वो बड़ी एज के बच्चे को भी लव की बहुत ज़रूरत होती है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे ट्यून टू देयर इमोशंस. सो दोज वर सम ऑफ द स्टेज ऑफ लाइफ बेस्ड. अब मैं थोड़ा सा आपको लाइफ इवेंट्स की तरफ ले जाऊंगी दैट कैन बी डिस्ट्रेसफुल एंड दैट यू वांट टू पे अटेंशन टू इन टर्म्स ऑफ व्हाट कुड बी a reason why somebody could be suffering. Noticeable चीज़ें आप अपनी relationship में, if you are in a committed relationship, if you're married, engaged, you want to definitely notice these things in a relationship, and I will share some elements with you. एक बड़ा अच्छा comment आया है, and that is temper issues because of excessive video games, especially in boys. So research show करती है, a lot of studies and research shows that excessive TV watching and excessive gaming does increase the temper tantrums for sure. So इसको रेगुलेट करना ज़रूरी है, बट ये चीज़ ऑल बैड नहीं है. आई वुड इन्वाइट यू टू कंसिडर कि आप ऑल और नथिंग अप्रोच ना लें. आप ये मत सोचें कि ये सब बैड है. लाइक अ लॉट ऑफ टाइम्स आई नो पेरेंट्स फील इट्स ईजियर टू से नो TV देन टू से सम TV, बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ पेरेंट बढ़ जाती है कि उसको मैनेज करना पड़ता है. बट यू हैव टू नो दैट देयर आर अदर थिंग्स हैपनिंग, बिकॉज TV a lot of times या गेमिंग हम पेरेंट्स के लिए भी छुट्टी टाइम होता है, राइट, बिकॉज द चाइल्ड इज़ कम्प्लीटली जोन्ड इन. सो इसको रेगुलेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू नो कि आप बच्चों से फीलिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं कि नहीं. सो डेफिनेटली देयर कुड बी, बिकॉज बच्चों का रियलिटी से थोड़ा सा टच चेंज हो जाता है. सो दैट वॉज अ वेरी गुड पॉइंट ब्रॉट अप, बट definitely pay attention to it, especially अगर बच्चे, again, कोई भी चीज़ आपकी daily functioning के बीच में आ रही है. So gaming and video gaming is not an issue unless बच्चा नहा नहीं रहा, homework नहीं कर रहा, school नहीं जा रहा, अपनी regular functioning वाली चीज़ें नहीं कर रहा, because they just want to game. So those are some of the things. I'll come back to the relationship. Great question. And point out, अगर आपको लग रहा है कि आपके स्पाउस या आपकी रिलेशनशिप में withdrawal फील हो रहा है, कनेक्शन नहीं हो रहा है, there is a little bit of a change in sexual intimacy, there is a little bit of hostility. A lot of times relationships में जो strain होती है वो फिर एक दूसरे को यूज़ किया जाता है punching bag के लिए, and sometimes it's because one of the partners is going through something emotional.
So you also want to keep an eye on that and reach out to your partner. ये चीज़ें अपनी रिलेशनशिप में नोटिस करना थोड़ा सा ईजियर होता है. लो एनर्जी नोटिस करना या फिर इनएबिलिटी टू कोप विद रिलेशनशिप इश्यूज़. रिलेशनशिप के हवाले से मैं थोड़ी सी इवेंट्स को पॉइंट आउट करूँगी. आप अ लॉट ऑफ टाइम्स नोटिस नहीं करते. It is it's very important to notice life event causing distress. So I want to name some events जिसके लिए थोड़ी सी support, counseling, psychotherapy, even temporary medication support might be a good idea. Death of a loved one. फैमिली में अगर डेथ हो जाए, फैमिली में अगर आप इफ़ यू लूज़ अ लव्ड वन एंड आपको 6 महीने से साल से ज़्यादा लग जाए, 6 महीने से साल तो कहीं नहीं गया आपकी एक्टिव ग्रीविंग में, बट ग्रीफ इज़ समथिंग वेरी फ्लूइड. यू थिंक यू हैव ग्रीव्ड द लॉस ऑफ योर लव्ड वन. 5 साल बाद आप कहीं बैठे होंगे और आपको एकदम से वो मेमोरी आएगी एंड यू विल फील लाइक यू आर ग्रीविंग ऑल ओवर अगैन. So that definitely requires some processing, and if you find yourself in that space and not being able to talk about your loved one without crying, then you definitely need some support and help. Another thing that would be important would be to consider help अगर आप घर में किसी long term illness को support कर रहे हैं. So a lot of times हम patient पे focus करते हैं और हम पेशेंट की फैमिली पे फोकस नहीं करते. तो अगर आपके घर में कोई लव्ड वन है जिसको केयर की ज़रूरत है, नाउ दिस कुड बी अ पेरेंट दैट यू आर टेकिंग केयर ऑफ फॉर लॉन्ग टर्म, चाहे एजिंग हो, चाहे कोई इलनेस हो, और चाहे कोई बच्चा हो जिसका कोई ऐसी सिचुएशन हो, चाहे वो किसी कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो या कोई भी ऐसी उसकी स्पेशल नीड हो जिसको आप सपोर्ट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म. It is imperative and critical that you seek help, because जो fatigue होती है, जो emotional fatigue होती है for a caregiver जिनके family member का वो ख्याल कर रहे होते हैं, is very important. Another life distressing event is divorce. So if you are in that very, very unfortunate situation, you want to consider getting help. एंड लॉट ऑफ टाइम्स हमारे यहाँ ये कहा बहुत कॉमन प्रैक्टिस होती है कि आप फैमिली से बात कर लें. माई एडवाइस इज़ कि फैमिली से बात करना इज़ गुड, यू हैव कम्युनिटी, लेकिन टॉकिंग टू अ न्यूट्रल पर्सन, अ ट्रेन्ड प्रोफेशनल विल गिव यू इंसाइट अबाउट योर सेल्फ, जहाँ पे आप एक बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को समझ सकते हैं और अपनी तकलीफ़ को प्रोसेस कर सकते हैं विदाउट thinking of other people and without the fear of judgment. So it's very important that you seek that support outside of your family. Another distress causing situation can be a move. आप कहीं से भी मूव कर रहे हो, दुनिया के किसी कोने से भी आप मूव कर रहे हो, चाहे आप वेस्ट से इधर आ रहे हो, चाहे आप wherever you are, it's hard. So considering all members of the family that could be impacted by it is a really, really critical thing to consider getting help for, getting support for. Families strain होती हैं, बच्चों को बहुत बहुत hard होता है बच्चों के लिए. So considering support is very important. Another element जहाँ पे आपको support की ज़रूरत हो सकती है और एक professional आपकी बहुत बेहतर मदद कर सकते हैं is newlyweds when you are in a relationship. And now this does not just apply to new marriages but remarriage as well, because वो जो first 2 years of adjustment period होते हैं वो बहुत tough होते हैं. So having a neutral space instead of becoming a part of the gossip stream is a very safe place to learn how to be in a healthy relationship. Becoming a new parent, ये भी बहुत एक important चीज़ है. The last two that I put there, a lot of people don't think कि इसमें ज़रूरत होती है, but बहुत ज़रूरत होती है. is जब आपके जॉब में स्ट्रेस है, this is your income you're talking about. कभी कभार colleagues से get along नहीं करते या बॉस से स्ट्रेस हो रही है. Now ये आपकी रोज़ी रोटी का ताल्लुक है, तो it's an important thing to consider
getting help for, finding a neutral space, because अगर आपकी strain होगी और आप family में लाते हैं उस चीज़ को, a lot of times it causes more distress in the family because सबको survival का fear होता है. So having a safe place to really process what you are going through is an important thing. Financial distress, getting financial counseling is a very important part of getting help. So really considering these things for counseling, you know, अगर आपके teenagers हैं, if you live in a different country or a culture and you're raising children in a different country and culture, जहाँ पे you know चाहे आपकी family values, चाहे religious values different हों, very important to consider getting help so you're not damaging your children and your relationships. So those are some life situations that I will definitely consider when you are thinking of getting help. So I just wanted to stop there, and moderators have shared with me that you know it was a better idea for us to maybe try to answer questions later on. But I will say that you know in places like Pakistan, mental health is a stigma topic. In our social circles, it's very hard. You know, हमारी social dynamics इस तरह की हैं कि हम वहाँ पे what is called fine reporting करते हैं. You know, हम बिल्कुल ठीक हैं, हमारे बच्चे बिल्कुल perfect हैं, हमारी family life बहुत perfect है. People are not used to reporting imperfection. You know, I'm struggling, I'm alone, I don't know what to do with the situation. I'm noticing that something is wrong, but I am you know in a space where I don't know what to do. तो अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी on what happens in the brain when we are going through a struggle sometimes. और ये एक बहुत simple response है. I think most of you will know this, but I want to remind you is that what happens is हमारी brain automatically, हमारे 2-3 बहुत सारे हिस्से होते हैं brain के, but a couple of them that I will point out to. तो एक होता है जो हमारा स्मार्ट ब्रेन जिसको कहते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जहाँ पे हमारी क्रिटिकल थिंकिंग, हमारी डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं. और फिर एक हमारा मिड ब्रेन होता है जो हमारे सर्वाइवल ब्रेन है, हमारा लिम्बिक सिस्टम है. एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स वहाँ पे क्या हो रहा होता है कि 3 ट्रिगर्स होते हैं कि अगर कोई डिफ़िकल्ट चीज़ आती है तो हमारी 3 बेसिक रिस्पॉन्सेज होती हैं, फाइट, फ्लाइट एंड फ्रीज. तो जब कोई चेंज आता है हमारी ज़िंदगी में जो टफ होता है, वी आर आइदर फ्रोजन, वी आर नोटिसिंग इट बट वी डोंट नो व्हाट टू डू, और वी जस्ट वांट टू रन अवे फ्रॉम द सिचुएशन, और वी स्टार्ट engaging in chaos. तो ये बेसिक चीज़ें होती हैं. एंड इफ़ यू नोटिस योर सेल्फ डूइंग दैट, if you notice yourself fighting, just say for example, one of the questions that has come is, how do you suggest to convince someone to seek help? ये एक बहुत sensitive topic है. You know, I mean, can you imagine the potential disaster अगर आप किसी से कहेंगे, you know, because ये चीज़ इतनी stigmatized हो गई है, couples, family members लड़ाइयों में एक दूसरे के ऊपर use करते हैं, you need help, you need help. You know, it's so sad. You know, we've all done this in our very special relationships या गुस्से में या negative तरीके से. So it's very important to consider elements where you can share vulnerability. So if you want to convince someone to seek help, you have to share, or an example would be to share your own vulnerability. You know, जैसे बच्चों को पालने के लिए the example that I use is children don't do. It's a very famous quotation. Children don't do as we say, children do as we do. तो जब आप मॉडल करते हैं तो बच्चे वही करते हैं. आपकी बातें बच्चे, kids tune us out whenever we're trying to lecture us. They notice what we do and they follow. So similarly, if you share what you follow, there's a higher chance somebody else will do the same. Because उसमें फिर shame नहीं होगा. You won't be coming from a higher position. You need help, I don't. It's like, I got help, consider it. And come from a place of humility and understanding. ये बहुत sensitive चीज़ है. So I would be extra cautious and loving.
and being vulnerable sometimes definitely helps. एक और बड़ा अच्छा comment आया है about faith and how do you balance the two between religion and counseling. And I'm a big believer. You know, I live in the US and I get sought out by the masajid, and it's getting more common now to understand that these two things can coexist. You know, I like using the framework of saying that, you know, the Quran is a book of wisdom, and uska first instruction is read. It's not pray. It's not, you know, for women it's not do hijab or whatever very strict instruction. The first instruction in the Quran is to read, and the way I understand it is that we are encouraged to learn. तो एक इतनी बड़ी knowledge about the brain and emotions and chemicals and how they work and how we can be better human beings, तो ये दोनों चीज़ें coexist हो सकती हैं. Unfortunately, because I see clients, मुझे बहुत अफसोस होता है when I see जब parents अपने बच्चों को judge करते हैं और उनको कहते हैं कि तुम्हारा religion कमज़ोर है या दीन कमज़ोर है, that's why you're struggling. I invite you to please consider not doing that, because you know, this is a real thing. There is a chemical imbalance, there is a real struggle there, an emotional struggle there. सब लोग different होते हैं and their journey is different. So judging others in their challenge would be really a sad place to be. So I would highly recommend encouraging an inclusive, understanding environment. We have a little bit of time to grow in that space. थोड़ा सा हम struggle करते हैं. And you know, especially जब मैं teenagers और बच्चों के साथ काम करती हूँ, you know, I usually work with teenagers and above, and I see them struggle with that. It's sad. And then I see these families who carry their faith and get mental health support for their kids, and it's brilliant. And you know, adults who do the same. So there is an opportunity. Unfortunately, बहुत misinformation है बाहर about this element and about mental health. West में ये चीज़ अब थोड़ी सी better हो रही है, where I'm noticing many religious institutions encouraging knowledge, because नज़र आ रहा है कि बच्चे, teenagers, adults are suffering when they don't understand it, when they don't take the medicines, उनका diagnosis नहीं होता अगर कोई mental illness है, और फिर जब diagnosis हो जाता है तो उनकी lives इतनी ज़्यादा on track आ जाती हैं और उनको इतना support मिलता है. So it becomes very encouraging. I hope this was helpful, and I will look at the moderators list to see if there is anything else that's coming up for questions. Religion ke baare mein I did talk about that. And yes, talking to somebody to seek help. I will also talk a little bit about seeking appropriate help, because I know कि Pakistan में especially mental health professionals कम हैं. I invite you to be very mindful कि आप थोड़ा सा notice करें कि किसी की training क्या है उनसे help लेते वक्त. Because it's a very sensitive thing. You're being emotionally vulnerable in front of someone. You want to make sure कि आप qualified, trained professionals ढूंढें, and I know it's hard. It's hard. और जो professionals हैं out there, you know, if they listen to this now or in the future, even if you are a paraprofessional, you're somebody who is interested in the field and you're getting some training, I would invite you to consider being very transparent with your potential clients and telling them कि आपकी training यहाँ तक limited है. Making sure that taking care of your clients' well-being is an important element of your profession, because professional integrity बहुत important है हमारी field में. So being honest to yourself and to your clients. और limited training भी बहुत valuable है in Pakistan, because वहाँ पे है नहीं. तो अगर आपकी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग है या सर्टिफिकेशन है या जो भी आपने पढ़ा है या अपने आप को ट्रेन किया है, be transparent about it with your potential clients and share with them कि
and then offer community. I'm so excited that this is a platform that is a very new platform. I want to talk a little bit about Rewire. कि इन्होंने ये conversation शुरू की है about mental health, and they want to have a virtual community as well as a live community to talk about mental health issues, to normalize it, because it's there, it's all over. I have clients I support from Pakistan, and I'm very happy to support them and looking forward कि वहाँ पे professionals की इतनी community बढ़ जाए कि वहाँ पे local support बढ़ जाए. So really important for us to continue doing this good work. एक और question आया है, wonderful question. Is it possible to live a life normal life if you're married to someone with conditions like schizophrenia? So I am very happy for the question, and so I want to say two things. पहली बात तो ये कि normal क्या है, ये हमें define करना पड़ेगा. Can we have a robust functioning life managing someone's illness? Absolutely. I don't see why. I will tell you that I've had the pleasure of supporting couples with many diagnoses, and including this. तो जब आपकी medicines managed हों, जब आपकी साइकोथेरेपी चल रही हो, और जब आप में लव और रिजिलियंसी है और स्किल्स हैं उन हम्प्स को डील करने के लिए, एब्सोल्युटली नॉर्मल जो है, आई थिंक आई ऑलमोस्ट वांट टू से दैट वुड बी अनफेयर. इट्स लाइक कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, कि आप एक बच्चे से कह रहे हैं एज एन एग्जांपल जिसकी स्पेशल नीड्स हैं कि तुम एक रेगुलर फंक्शनिंग बच्चे की तरह फर्स्ट आ सकते हो या नहीं. तो गिवन द लिमिटेशंस ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, एब्सोल्युटली लोग करते हैं, मैनेज करते हैं. दे आर सो सक्सेसफुल इन लाइफ. I have had the pleasure of working with people who have launched into successful careers. Their late diagnosis था, लेकिन फिर भी उनकी families अच्छे से चल रही हैं. Is it the easiest? Sometimes not. But on most days, they know what it is. देखिए, जब पता होता है ना क्या है, तो कोई blaming, shaming, सब चीज़ें नहीं होती. It's like blaming someone for having diabetes or blood pressure, or blaming someone for having cancer. It's so much easier to offer empathy when somebody has a physical illness. And it's almost shaming when somebody has a mental illness. ये culture हमारा change होना बहुत ज़रूरी है. And then the world is a better place. So in my view, absolutely, you can have a fulfilling life. जब stigma और shame हट जाएगा तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ को एक्सेप्ट करना. एक क्वेश्चन आया है, एट व्हाट स्टेज इज़ इट ओके टू गो टू प्रॉपर अथॉरिटीज़ टू टेक एक्शन टू हेल्प समवन इन नीड. ये एक बहुत ट्रिकी सवाल है, बिकॉज हर सिचुएशन बहुत डिफरेंट होती है. वेस्ट में जो क्राइटेरिया होता है वो सेफ्टी बेस्ड होता है, सेफ्टी टू सेल्फ एंड सेफ्टी टू अदर्स अराउंड यू. सो वो सेफ्टी स्टैंडर्ड जब मीट नहीं होता तो देन अनफॉर्चुनेटली, जिसको यहाँ पे कहते हैं बेकर एक्ट करा देते हैं, जहाँ पे उनको एक फैसिलिटी में कमिट कर देते हैं. एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स इट्स बिकॉज मेडिसिन मैनेज नहीं हो रही होती, और ये बहुत एक्यूट केसेस होते हैं जो हॉस्पिटलाइज या एक रिहैब फैसिलिटी में प्रोग्राम्स कंप्लीट नहीं होते, या उनकी मेडिसिन या उनकी इलनेस मैनेज नहीं हो पाती बाय द फैमिली. So, but it is a pertinent question. It's a good question. And then the other question also is कि किसी को help दिलाने के लिए family की education कितनी है, and उनको so there are many components. But I would definitely say कि safety को ध्यान रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, you will have to consider certain things. But nevertheless, it is an important question, because जब इस तरह के issues होते हैं, that's not the only person being impacted. There are people around them being impacted as well. So I don't know if that was helpful, but ये बहुत tricky सवाल है, हर situation पे depend करता है. एक और सवाल आ रहा है,
if someone has been displaying symptoms of illness for really long, is it personality or a mental illness? And can someone know the difference? That's a really good question, and I would probably ask Rewire to have another session where we talk about personality disorders and mood disorders, because personality और mood disorders में थोड़ा सा फ़र्क होता है, और अगर behaviorally बहुत सारी चीज़ें treat ना हो तो भी एक मसला होता है, but some of those components could be a personality disorder. And erratic behavior जब आपने कहा तो there are many types of erratic behavior, and that could be classified as a personality disorder, which is a mental illness. और फिर patient की age उससे भी depend करता है कि आप if it's a teenager, then थोड़ा बहुत the jury is out because there are so many other moving parts. But once they're in adulthood and the behaviors have been seen consistently over some time, then we have there are many things that it could be. Anger बहुत सारी चीज़ों का symptom है. Anger depression का symptom होता है. Anger कभी कभार mood disorder का symptom होता है. And erratic behaviors बहुत सारे होते हैं. A lot of times when the patient is saying erratic behavior or the family is saying that, I usually think of mood swings, and that could be many things. So yes, typically it is a red flag and trigger for assessing for mental illness, but diagnosis obviously conservative होता है with limited information. But ये symptoms जो हैं and especially जब आपको लगे कि किसी को बार बात समझानी पड़ रही है, but it seems like they repeat the same mistake again and again, then it is definitely steering towards a mental illness diagnosis. So ये बहुत एक critical चीज़ होती है जो नज़र आ जाती है. Another good question, fantastic question. Can the same person have multiple mental health issues? Absolutely. It is a very common thing to have co-occurring disorders. So many people will have those multiple diagnoses as you are going through that evaluation and assessment phase of really understanding, because यहाँ पे West में diagnosis पे, assessment पे, intake and history taking पे बहुत emphasis होता है, because you want to know what the issue is before you ever figure out a treatment plan. Then you find out that there are lots of co-occurring disorders, because again it's brain disease and you're looking at mental illness, तो जो related issues हैं, just like आप किसी को अगर डायबिटीज़ है तो टिपिकली वेट इश्यूज़ भी होंगे, टिपिकली फिर हार्ट हेल्थ भी होगी, तो उसी तरह ये वाले इश्यूज़ भी होते हैं. द सेम पर्सन विल डेफिनेटली बी मोर ससेप्टेबल टू mental health issues that they could be susceptible. So good question, and absolutely unfortunately. But यहाँ पे हम mental illness issues, because mental health is a big spectrum. There are so many components that will be playing a role in how you look at mental health, how you prevent it, how you have information to manage and support yourself and your loved ones. और फिर होते हैं कुछ symptoms that really need that support. So the very interesting question, if I've seen any research on how a person's education background is related to the way they respond to being more aware about their own symptoms. ये बड़ा अच्छा सवाल है और मैं इसका एक आपको funny जवाब देती हूँ, and then I'll give you, yes, I have. तो interesting research जो मैंने पढ़ी है कुछ, वो ये भी कहती है कि जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं उनके symptoms पता करने में ज़्यादा देर लगती है, because they are so much more refined and educated. So if they have symptoms, yes, they are more aware. Absolutely, because when you're a well-read person, so I have the pleasure, most of my clientele is more educated. So because जब mental health is it's a more sophisticated product for many, और बहुत से फिर survival और crisis में आते हैं इसको access करने के लिए. So it's interesting because
पढ़े लिखे लोग इस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू करते हैं, मैंने डेफिनेटली देखा है. But for some diagnoses, such as Alzheimer's and so forth, आपका actually delayed diagnosis होता है, because आप इतने पढ़े लिखे और aware होते हैं कि पकड़ में आना मुश्किल होता है, because your cognitive processing is so strong that it takes longer to identify that this could be an issue, because you have so many other strengths that compensate for those. But in terms of awareness, absolutely. Like my clients come and half of the time they know what they're struggling with and we get to work immediately. जो exposure or awareness जहाँ कम होती है वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लगता है. So great question there. Another question that's coming is it true that symptoms like anger could be a result of physical illness and not always mental illness, and that both routes can be taken? Absolutely fantastic questions. यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बताऊंगी. Anger or depression can definitely be symptoms of not just physical illness, but if you're taking medication, it could be a side effect as well. So for example, anger is a very typical side effect if you have high blood pressure. Depression could be a side effect if you take blood pressure medicine. So a lot of people don't realize it. So when I do an intake with a client, I'm usually getting a list of their medicines, because I need to know what they're on and what, कि contraindications क्या हैं उन दवाइयों की. तो psychotropic दवाइयाँ खाली नहीं, उसके अलावा और भी दवाइयाँ जो वो ले रहे हैं उनके side effects में depressive symptoms हो सकते हैं, एजिटेशन हो सकती है, नर्वसनेस, एंग्जाइटी हो सकती है, बिकॉज दवाइयों का स्ट्रेंथ्स बहुत सारी होती हैं बट लिमिटेशंस भी होती हैं. So and on that note, and very good point, and there's a lot of research being done that a lot of times it's the nutrition and the vitamins. So many children and many adults are responding very well to nutrition-based therapy, where a difference in diet. ये बहुत सारा नोटिस किया गया है कि जिन बच्चे जिनको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम का डायग्नोसिस होता है, उन बच्चों की डाइट से उनके मूड्स पे बहुत फ़र्क पड़ता है. जिन बच्चों का डायग्नोसिस ADHD होता है, आप उनकी शुगर और प्रोसेस्ड फूड की अगर कंजम्पशन कम कर दें तो उस पर बहुत उनकी हेल्थ पे फ़र्क पड़ता है. सो एब्सोल्युटली देयर आर फिजिकल कंपोनेंट्स एज वेल, एंड इट्स नॉट ऑलवेज, एंड देन ऑल्सो इट्स सिम्टोमेटिक. आप ये मत सोचें कि अगर किसी को एक दफ़ा गुस्सा आ गया तो मेंटल इलनेस हो गई. दैट्स अ नॉर्मल इमोशन, बट इफ़ इट्स कमिंग रिपीटेडली then definitely it's something that needs more attention. So the idea is कि अगर आपकी regular functioning में कोई चीज़ आ रही है और हद से ज़्यादा हो रही है, then it's a red flag. Great questions coming. I'm very, very impressed and so glad that you guys are asking some good questions. Question is, some mental illnesses cause people to have very low self-awareness. People can't always analyze their behavior as not being normal and may not accept there is a problem. Is there any recommended course of action for such cases? अब यहाँ पे आपको ये भी बता दूँ कि अगर कोई for example mood disorder है या personality disorder है, you need to understand that many people who may be suffering do not have what is called insight. तो insight तो बहुत कम होती है फिर, और वहाँ पे family members would have to step in, and then they would need to start getting educated and normalizing. देखिए बहुत important है कि patient की integrity manage हो in the process. You cannot look at somebody as a sick person who is half human, और आप अगर integrity, humanity और respect के साथ patient के साथ काम करेंगे, अपने loved one के साथ काम करेंगे, तो उनको help भी जल्दी मिलेगी, and they won't feel like they are subhuman because they have this challenge or this issue. So definitely, आप उनके symptoms पर focus दें, approach them with kindness and understanding, normalize things for them. जैसे for example, people who have ADHD symptoms have short-term memory. उनको चीज़ें भूल जाती हैं. उनका फिर automatic defense mechanism होता है कि झूठ बोलना पड़ता है. So they get a lot of labels like ये तो झूठ बोलता है, ये तो liar है.
when you know the diagnosis, then you don't have to call them jhuta and liar. So it helps the shame, because they'll understand कि इनको याद ही नहीं रहता, and to cover it up, the best option is to lie. And so it's out of defense mechanism that they go there, and they are able to process that. So ये बहुत sensitive tender चीज़ होती है, and आपके सवालों से एक चीज़ बहुत easily मैं अब obvious कर पा रही हूँ. That's why you need the professional help, because हर केस फ़र्क होता है, हर फैमिली सिस्टम फ़र्क होता है. उस इंसान को, उस फैमिली सिस्टम को किस तरह लेकर चलना है और उस फैमिली को कैसे गाइड करना है ताकि वो उस पर्सन को अच्छे से सपोर्ट कर सकें is a critical element of mental health. When you see a loved one suffering and when you see that it's obvious, और जब आप कहेंगे तो बहुत भारी लगेगा, बट अगर कोई mental health professional कहेगा तो it's done in a way that maintains integrity for the person. So उनकी self worth को minimally impact करके अगर हम इस चीज़ को लेकर चलें तो that's better, because they're suffering and hurting as well. Another question, and I think we'll run out of time soon, so definitely, have you seen instances of seeing multiple family members of the same household having varying degrees of mental health issues? So absolutely, because there is a huge genetic component in it. तो ये तो बहुत अच्छा सवाल है and very insightful question. So yes, because there is a genetic component, nature versus nurture. So there are families, बच्चे जब उनकी diagnosis होती है for bipolar disorder या फिर depression या फिर anxiety disorder, the first question is to look at the family of origin and see कि और family में किसको है. फैमिली हिस्ट्री से तो बहुत फ़र्क पड़ता है. अगर आप नोटिस करें कि कभी किसी को कैंसर होता है तो सबसे पहले पूछते हैं कि फैमिली में और किसको है. सो देयर इज़ अ जेनेटिक कंपोनेंट एंड फैमिली मेम्बर्स डू हैव इट. तो ये अवेयरनेस इतनी ज़्यादा रिलीफिंग होती है, बिकॉज द मोर यू नो, the easier it is to be able to help the family and to normalize it for them and say, this is a genetic component. It's like they won't have to be shamed for having it because it was out of their control. So ये तो बहुत important चीज़ होती है. But steering them towards mental health help is awareness is the name of the game. Having the conversation in a general way. अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है और आप जाके उनको बोलें जी आपको प्रॉब्लम है, आप जाके ये करवा लें, really doesn't do the trick. If anything, you risk severing your relationships with them कि ये अजीब बदतमीज़ इंसान है, ये इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो the more respectful, tender way is to share vulnerability, to meet them where they are and talk about the struggle. और आपका जो भी रियल एग्जाम्पल हो या आपके किसी लव्ड वन का एग्जाम्पल हो, बग़ैर उनकी प्राइवेसी को वायलेट करते हुए आप जो शेयर कर सकें, तो नॉट शेयरिंग के जी फलाने के भाई के साथ ये हो रहा है, बट सेइंग दैट समबडी आई नो इज स्ट्रगलिंग एंड आई हैव सीन सच चेंज बिकॉज दे गॉट हेल्प. Sharing those examples and normalizing it for the family, because getting help, हमारा कल्चर बहुत gruff है इन मामलों में, and it's very shaming for so many people to just feel like हमें अटैक किया जा रहा है या हमें जज किया जा रहा है for having a mental health issue. और हमारे यहाँ क्या है कि जब तक बात बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होती, हेल्प नहीं मिलती. जब तक कोई सुसाइड नहीं कर रहा, जब तक कोई घर से नहीं भागा, जब तक किसी ने ड्रग्स नहीं ले ली, उसको हेल्प नहीं मिली. तो इस इंटेंसिटी का हम वेट करते हैं कि वो पूरा फॉल अपार्ट हो जाए, और हम वार्निंग साइंस नहीं देखते. तो जो हमने आज कवर किया था वो जस्ट सिंपल वार्निंग साइंस दैट यू कुड रियली नोटिस एंड स्टार्ट हैविंग द कॉन्वर्सेशन. और आप encourage करें उनको to be a part of forums where your awareness is increased. So people who are suffering do not feel, and family members of people who are suffering do not feel like they're the only ones and they're alone in this. Is the bigger mission. And it's consistent with the mission of Rewire as well. So we're going to run out of time soon. I so appreciate Rewire for inviting me to be a part of this, and for those of you who listened.
And I believe that we're going to be saving the recording for future access. And great, fantastic questions came, and hopefully you will find this valuable. Feel free to share feedback with the Rewire team so they can put together more presentations for you, and they will be engaging with other mental health professionals as well, who will bring knowledge and resources to you. And I so value your time in joining me. Hope everybody has a safe weekend, and thank you so much for being a part of this webcast. And we'll be in touch, and I will talk to you soon. Take care. Bye bye.